Good evening, everyone. So when we do the tongue diagnosis, so we have to be careful for few points. हमें कुछ चीजों का हमेशा याद रखना होगा. That we have to do the tongue diagnosis in the very good light. हमें जीभ को अच्छी लाइट में देखना है. Maybe good sunlight or maybe good fluorescent light. Whether the sunlight or the fluorescent light. और जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि जीभ बाहर निकालो, एक बार में सिर्फ 15 सेकंड के लिए निकलवाएंगे, नहीं तो जीभ लाल हो जाएगी. So when we are telling the patient, okay, bring your tongue out. So we'll tell the patient, bring the tongue out, but not more than 15 seconds. Otherwise, turn will red, turn will turn red, turn will become red. Otherwise, जीभ लाल रंग की हो जाएगी और हमें एक सही डायग्नोसिस नहीं मिलेगी. And do not see the tongue just after eating the pan, spicy food, after smoking the cigarette and the tobacco, because these things can create the different color which is not natural. So we will miss the things which we want to see. अगर किसी व्यक्ति ने पान का सेवन किया, तंबाकू खाया है, सिगरेट पिए है, तो हम तुरंत टंग नहीं देखेंगे, थोड़े समय के बाद देखेंगे, मुंह साफ करने के थोड़े समय के बाद, क्योंकि इनके कारण जीभ का रंग बदल जाता है. कभी जीभ लाल हो जाती है, जीभ का रंग बदल जाता है. If the person taking antibiotics, अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का सेवन कर रहा है, then the person is getting stomach yin deficiency, then the root of the tongue become rootless. अगर आपने किसी की जीभ देखी और आपने जीभ देखकर तुरंत डिक्लेयर कर दिया, भाई आपकी जीभ की तो कोट कई जगह से निकली हुई है, तो ये रूटलेस कोटिंग है. Now you're looking the tongue like that, and immediately you have declared that you are not having perfect coating. But make sure the person whether taking antibiotics or not, कि क्या व्यक्ति एंटीबायोटिक का सेवन कर रहा है. अगर व्यक्ति ने एंटीबायोटिक का लंबे समय तक सेवन किया है, तब भी ऐसी टंग उसकी झड़ सकती है बीच बीच में से. So the person is taking the antibiotics, the tongue might be like this, and we can see the rootless coating at many places. कई जगह से टंग की रूट निकल जाती है. And when we see the person is taking the steroids, अगर कोई व्यक्ति स्टेरॉइड का सेवन करता है, so because of the steroids, tongue becomes swollen like a sponge. स्टेरॉइड के सेवन से भी शरीर भी फूल जाता है, शरीर भी मोटा हो जाता है, और टंग भी फूल जाती है, टंग भी swollen हो जाती है, and the tongue become red and swollen. If the person is taking the steroids, so the tongue become red and swollen. So make sure, if you are looking the tongue and you are seeing the swollen tongue, and as soon as you see the swollen tongue, you will be thinking, oh, there might be phlegm, there might be dampness, because we have already discussed, if the tongue is swollen, it might be too much phlegm. If the tongue looking like a sponge, like the sponge has soaked the water, it might be phlegm. So make sure the person is taking steroid or not. तो कभी कभी हमने मोटी जीभ देखी और हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपके शरीर में फ्लेम ज्यादा है या डैम्पनेस ज्यादा है, तो देख लीजिए क्या व्यक्ति स्टेरॉइड का सेवन करता है, क्योंकि स्टेरॉइड के सेवन से व्यक्ति मोटा हो जाता है, उसकी जीभ भी मोटी हो जाती है. So definitely we have to find out, and then we have to do the treatment. But first we have to make sure the person is not taking the steroid. Fine. So if the person is taking the bronchodilator, हम जानते हैं कई लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, श्वास की तकलीफ होती है, और उसके लिए वो इनहेलर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनका जीभ का टिप लाल हो जाता है. तो पर्सन इज टेकिंग द इनहेलर because the person is suffering with the asthma. If the person is suffering with the asthma and using the inhaler, bronchodilator, then also tongue become red. हम जानते हैं कि कई लोग जो अस्थमा के रोगी होते हैं वो ब्रोंकोडाइलेटर का प्रयोग करते हैं, और इस ब्रोंकोडाइलेटर के प्रभाव से भी उनकी जीभ का टिप लाल हो जाता है. राइट. So in this condition, the tip of the tongue become red.
एंड इफ द पर्सन इज टेकिंग डायूरेटिक्स, अगर कोई व्यक्ति पेशाब कराने वाली दवाइयां खाता है, द पर्सन इज टेकिंग डायूरेटिक्स. The meaning of diuretics, when the person is going for more and more urination, person urinating a lot. So if the person is urinating a lot, this also decrease the body fluids. इससे भी शरीर में body fluids की कमी हो जाती है. और क्या होता है रिजल्ट कि yin की deficiency हो जाती है. The person is suffering with the yin deficiency. Now the person is getting yin deficiency because when person is urinating a lot, because of more and more urination, what will happen? The fluid will get decreased, the yin will get decreased. अगर व्यक्ति ज्यादा यूरिन करता है तो उसके शरीर का फ्लूइड कम हो जाता है, उसके शरीर का yin कम हो जाता है. और क्या प्रभाव होता है? ये प्रभाव होता है कि शरीर का yin कम हो जाता है. तो पर अगर व्यक्ति ज्यादा यूरिन जाता है, जैसे कई लोग हैं जो प्रोस्टेट के रोगी हैं, या कई लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको डॉक्टर यूरिन की दवाइयां देते हैं. There are many patients taking the medicines for more urination. So many patients having swelling in the body, even doctor giving more the medicine for urination. In that condition, the person is suffering with the yin deficiency. So this is the normal tongue. ये तो normal tongue है. And this tongue is having more coating. इस tongue में ज़्यादा coating है. So this tongue is having yin deficiency. So we can see the coat is absent at many places. So this tongue is the tongue of yin deficiency. तो जो पहले नंबर की टंग है वो yin deficiency की टंग है, दूसरी टंग नॉर्मल है, तीसरी टंग पर कोटिंग ज्यादा है. So the first tongue is having yin deficiency because person is taking the medicine for urination. The second tongue is normal, third tongue is having more coating. So a person is becoming, the tongue of the person become like this. Sometimes we see the red point on the tongue. कभी कभी हम जीभ के ऊपर लाल लाल रंग के कलर देखते हैं. Tongue is having red colored points. कभी कभी हम देखते हैं कि जीभ के ऊपर लाल लाल करके रंग के डॉट बन जाते हैं. Many times we see there's a red spots are forming over the tongue, right? So what is the reason for that? So red spot because of the anti-inflammatory drug. Anti-inflammatory drug. हम कई दवाइयां खाते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन. ये एंटी इंफ्लेमेटरी यानी दर्द को मिटाती है, सूजन को मिटाती है. अगर आप ने देखा होगा कि आपको चोट लग गई, सूजन आ गई, तो डॉक्टर यही दवाइयां देते हैं. When you are getting injury, swelling, and you are going to the doctor, they are giving ibuprofen. So this is called anti-inflammatory medicine. This is very hot medicine, very hot in the nature. ये दवाइयां काफी गर्म होती हैं. We are also telling them NSAID. NSAID means non-steroidal anti-inflammatory medicine. So when you are getting injury, swelling, so either the doctor will give steroids or will give some other medicine which is not the steroid. They are called NSAIDs. Means ऐसी दवाइयां जो स्टेरॉइड नहीं है तब भी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं. So these drug also which is not the steroids can create the red spots over the tongue. For example, we can see the many medicines available in the market. Mefenic acid, mefenamic acid. Okay. There are many medicine we are taking for the pain killing purpose. हम जैसे diclofenac sodium, it is very common medicine, diclofenac sodium, or boberon. Boberon is a very famous medicine. Or ibuprofen. Ibuprofen is the very famous medicine. We are taking these medicine. दर्द की दवाइयां हम लेते हैं. अगर कोई व्यक्ति को दर्द है और बार बार ब्रूफेन की दवा खाता है, बार बार बोबेरॉन लेता है, तो भी उसकी जीभ पर लाल लाल रंग के स्पॉट्स बन जाते हैं. So the person is taking boberon, diclofenac, or any types of the NSAID, non-steroidal anti-inflammatory medicines. So we can see the tip of, there are lots of red dots around the tip, right? And when the person
इज टेकिंग एंटी कैंसरस मेडिसिन। कई बार लोगों को कैंसर तक की बीमारी हो जाती है, और व्हेन द पर्सन टेकिंग एंटी कैंसरस ड्रग्स, टंग बिकम ब्राउन और ब्लैक। वी कैन सी द ब्राउन और ब्लैक कोटिंग ओवर द टंग। हम जीभ के ऊपर ब्राउन या ब्लैक रंग की कोटिंग देखते हैं। सो लेट्स सी वंस अगेन। So whenever we are doing the tongue diagnosis, first we should have the good light to see the tongue. हमारे पास अच्छी लाइट होना चाहिए। ओके, एक बार में 15 सेकंड से बाहर जीभ नहीं निकालते। We don't ask the patient to take out the tongue more than 15 seconds. Okay, we don't see the tongue after eating the pan, spicy food, cigarette, tobacco. We can see after few hours or after at least 1 hour or 2 hours or many hours. हम टीका खाने के बाद टंग नहीं देखते, तमाकू पुड़िया पान खाने के बाद, स्मोकिंग करने के बाद टंग नहीं देखते, क्योंकि इससे जीभ का रंग लाल हो जाता है या बदल जाता है। तो कुछ घंटों के बाद देख सकते हैं। विद द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ यिन। जब एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं तो यिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। यही हमने बात कही थी, जब कोई व्यक्ति यूरिन की दवाइयां लेता है, यूरिन कराने की, तब भी जीभ पर से कोटिंग निकल जाती है। सो व्हेन द पर्सन टेकिंग द एंटीबायोटिक्स बिकॉज ऑफ द हीट, there is a deficiency of the stomach yin, then there is an absent of coating. So antibiotic create stomach yin deficiency. So when someone is taking the antibiotic, if we do the treatment of the stomach yin deficiency, person will be having very good effect. The same effect will come if the person is taking some medicine for urination. Then the steroid creates swollen and the red tongue. Steroid के सेवन से जीभ मोटी हो जाती है, लाल हो जाती है। The bronchodilator creates the tip of the tongue red. Only the tip of the tongue will become red because of bronchodilator. जिन लोगों को अस्थमा की तकलीफ होती है, the person suffering with asthma, taking lots of medicine, taking inhaler many times, so the tip of the tongue become red. The person taking diuretics suffer with the yin deficiency, because the person taking the diuretics, it decreases the body fluids. इससे हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है। And the NSAID, non-inflammatory steroidal medicine like the Boveron, like the Brufen, जब हम दर्द की दवाइयां खाते हैं, इससे भी हमारे जीभ के ऊपर लाल लाल रंग के स्पॉट बन जाते हैं। These medicine also creating the red spots over the tongue. So make sure when the person is taking these all things, so we have to cross verify. Okay, in this way, when the person is coming to you with a red tongue, you can ask, okay, are you eating tobacco? Have you taken today spicy food? अगर किसी व्यक्ति की जीभ लाल है, पूछ सकते हैं कि आप कोई पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करते हैं, या फिर आपने आज कोई तीखा खाना खाया है। If the person is having lots of rootless coatings, we can ask, are you taking some antibiotic or have you taken the antibiotic for longer time? क्या आप एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं? क्या आप पहले एंटीबायोटिक बहुत ले चुके हैं, अगर आपको इस तरह की कोटिंग दिखे? और यू कैन आस्क, हैव यू टेकन सम मेडिसिन फॉर यूरिनेशन? क्या आपने यूरिन कराने की दवाइयां खाई हैं? नाउ व्हेन यू सी द टंग इज वेरी swollen, you can ask, okay, have you taken the steroids for longer time? When you see the red and swollen tongue, जब आप जीभ को मोटा और लाल देखें, तो आप पूछिएगा, क्या आपने स्टेरॉइड की दवाइयों का सेवन करते हैं या किया है? And when you see the tip of the tongue is red, we can ask, okay, have you taken some medicine for the lungs? Have you taken some inhaler for the lungs? क्या आपने लंग की कोई बीमारी के लिए कभी कुछ लिया है, या आपने क्या इनहेलर का प्रयोग किया है? Have you used the inhaler? So in that way we can ask the questions. Now, even if the person is having red points around the tongue, अगर जीभ के ऊपर काफी सारे लाल लाल रंग के दाने बने हुए हैं, we can ask the patient, have you taken some painkiller medicine? Have you taken some painkiller for any pain in the body? क्या आपने दर्द को मिटाने के लिए किसी तरह के किसी पेन किलर की सहायता ली है? I will tell you, many % are taking the painkiller so frequently, and they are taking too much painkiller every day, month to month. Whenever they are having little pain, they just take the painkiller like this, very easily, in the easy way, without thinking the side effect of the painkiller. कई लोग बहुत ज्यादा पेन किलर का सेवन करते हैं। वंस ए वाइल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति
बहुत ज्यादा ले तो it's not good for the body, because these non-steroidal anti-inflammatory medicines are also harming the body. So we can see the red dots, red points over the tongue. They might be the reason because of the person has taken the anti-inflammatory drugs. Now we can see the lots of medicines available in the market: diclofenac sodium, mefenic acid tablets. There are many medicines available in the market and the people are taking them very frequently. इनमें से बहुत सारी दवाइयां हैं जैसे ibuprofen, we are taking it very frequently. Okay, so when the person is suffering with any problem, they are taking, the doctor are prescribing these medicine, but we can take the medicine once a while, but not very regularly, not very frequently. Otherwise they will create the red points over the tongue. नहीं तो ये दवाइयां हमारी जीभ के ऊपर लाल रंग के दाने पैदा कर देंगी. Now the person is taking anti-cancerous medicine because of the cancer, because of the heavy effect of the medicine, tongue turn black or the brown. तो जीभ के ऊपर, और आप ऐसा सोचेंगे कि भाई ऐसा तो कैंसर के कारण है. भाई कैंसर के कारण नहीं है, जी उसकी दवाइयों के कारण है. Definitely cancer is also very bad. It's also creating many problems in the body, but the medicine also creating their own effect. So brown tongue, black tongue, also the result of medicines. It might be the result of many medicines, and especially the medicine which we take for the cancerous. So we can see now when you see the tongue, जब आप जीभ को देखते हैं, तो जब भी आप जीभ को देखते हैं आपको 5 चीजें देखना होती है. You have to see the 5 things whenever looking the tongue of everyone. Number 1, tongue is spirit. What is the spirit? The meaning of spirit, हमने देखा है कि 10 लोग होते हैं. एक व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, लाइव होता है, और कुछ लोग बड़े डल टाइप के होते हैं, कुछ बीच के होते हैं. So we have seen the 10%, 1 out of 10%, 1% is very enthusiastic, energetic, lively, and doing all the many tasks with good smile, with good energies. So we can tell this person having very good spirit. Spirit means desire to do work. Spirit means charm on your face when you do some work. जब आप कुछ करो, जैसे आप किसी काम के लिए पैशनेट हो, तो आप कैसे खुशी से वो काम करते हो, उसे हम स्पिरिट कहते हैं. So the many person having lots of spirit, like we can see the kids are having spirits when they play, kids are having spirit when they watch the cartoon. So even when we become youth, we are having a spirit in many works. So when we look the person, if the person is having good spirit, see the tongue is having good spirit, it means we can cure the person very fast. इसका मतलब है कि हम इस व्यक्ति को ठीक कर पाएंगे बहुत जल्दी. तो पहले हमें स्पिरिट देखनी होती है. जीभ के अंदर एक लाइवलीनेस, जैसे किसी व्यक्ति को हम देखकर पहचान जाते हैं, यार ये व्यक्ति दमदार है, जानदार है ना, एंथुसियास्टिक है. We can find out the person, oh this person is having good energy, good enthusiastic, good intention. Okay, we are finding many positivity. In the same way, as soon as you see the tongue, you will find some positivity in the tongue, that is called spirit. The second is tongue color. Color play a very important role. Right now, remember very carefully, we are talking about the tongue color. हम जीभ के कलर की बात कर रहे हैं. हम ना तो जीभ के ऊपर पाई जाने वाली कोटिंग की बात कर रहे हैं, ना तो हम और किसी चीज की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार आप कोटिंग वोटिंग सबको हटा दो तो जीभ कैसे दिखेगी. How the tongue look like, only the tongue. We are thinking about the color of tongue only. How the tongue look like when you remove the coating, and just look at the tongue. So second, we have to think about the tongue. The tongue color also play a very important role. The normal color of the tongue, that is pale red. Pale red. So what is the reason of the pale red? We know that pale red. So normal tongue is having pale red. If the tongue is having more red, it's not good. If the tongue is having more pale, it's not good. If the tongue is having balanced color, means pale and red, then it's a good tongue. तो जीभ का जो सामान्य रंग है वो थोड़ा सा फीका लाल होना चाहिए. ज्यादा फीका है तो भी ठीक नहीं है, ज्यादा लाल है तो भी ठीक नहीं है. So second thing, we have to think about the color of tongue. Now we are coming the shape of the tongue. Shape play very important role. What is the meaning of shape? आपने देखा कभी तो टंग ऐसी हो गई जैसे स्पंज का टुकड़ा ना पानी पीकर मोटा हो गया. Sometimes you are finding the tongue, or tongue becomes swollen like sponge has soaked the water. It's not the good tongue. Now shape has changed. Sometimes we are looking the tongue,
tongue has become thick from the one side and other side is normal. So like the meaning of shape, use the tongue should be in the good shape, right? It should not be like this. On the one side it's swollen, on the other side is thin, on the tip it is not in the same size what it should be. तो शेप का मतलब होता है जैसे किसी का हमने चेहरा देखा, मान लो उसकी नाक अंदर दब जाए तो हम बोलेंगे यार शेप इसका नहीं सही नहीं है। एक आंख बड़ी एक आंख छोटी हो जाए तो बोलेंगे इसका शेप ठीक नहीं है ना। एक तरफ का चेहरा उसका मोटा, एक तरफ का चेहरा पतला हो जाए तो हम कहेंगे यार फेस सिमेट्री में नहीं है। So when we are looking someone and we are finding, oh, nose is not good, one eye is bigger, one eye is smaller, one side face is good, one side face is shrinked. So we are telling, oh, this person is not having good shape, good symmetry. In the same way, when we are looking the tongue should be having very uniform shape, very uniform symmetry. Tongue should not be too much swollen, tongue should not be too much thin, बहुत पतली ना हो, बहुत मोटी ना हो, एक तरफ से फूली एक तरफ से पतली ना हो, इसके शेप में सिमेट्री होना चाहिए. So we are looking the symmetry of the tongue, whether symmetry is good or not. So first we are looking the spirit, just how the tongue look like. Second, color of the tongue, and third, shape. Now we are coming to the coating over the tongue. अब हम देखेंगे जीभ के ऊपर कोटिंग कैसी है. If the tongue is having good coating, it means that's wonderful. The yellow coating is the sign of heat. White coating is the sign of coldness. So now we are looking the coating, whether the white coating, whether the yellow coating, green coating, brown coating, black coating. There might be many different types of the coating. जीभ के ऊपर जैसे हम जानते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठ के जब टंगर करते हैं, टंग क्लीनर से अपनी जीभ को साफ करते हैं, तो हम क्या हटाते हैं? हम जीभ की कोटिंग को हटाते हैं. So we are talking about that coating which we are cleaning in the morning after the brush, and we are clearing the tongue coating. So some coating can be cleaned wiped out very easily. Some coating cannot be wiped out very easily. कुछ कोटिंग ऐसी होती है जिसको निकालना आसान है, क्विकली आप निकाल सकते हो, और कुछ कोटिंग ऐसी होती है जिसको निकालना आसान नहीं है, आप क्विकली नहीं निकाल सकते. So now we look about the coating. We think each and everything about the coating. Okay, coating is green, coating is white, coating is black, coating is brown. Coating can be peeled out easily. Coating cannot be peeled out very easily. Coating is very thick. So we think all the aspect of the coating, and coating speaks a lot about the person. तो हम कोटिंग देखते हैं. ये चौथे नंबर की बात है. कैसे रंग की कोटिंग है, आसानी से निकलती है कि नहीं निकलती है, ये सब देखते हैं. एंड द फिफ्थ वी आर seeing the fluid in the tongue, moisture in the tongue, whether the tongue having enough fluid or not, tongue is dry or having good liquid. क्योंकि जीभ सूख जाए वो भी अच्छी बात नहीं है, और जीभ ज्यादा गीली हो जाए वो भी अच्छी बात नहीं. जीभ में एक फ्लूइड होना चाहिए, एक नॉर्मल फ्लूइड की मात्रा होना चाहिए. So the tongue should have a normal fluid. Tongue should have normal fluid level. If the tongue is having too much fluid, it's not good. If the tongue is having too much moisture, it's not good. So tongue should have the appropriate fluid, the appropriate moisture. So that is the fifth thing we see. तो जब भी हम tongue diagnosis करते हैं, 5 चीजें देखते हैं. When we do the tongue diagnosis, we see always 5 things. Number 1, spirit. Number 2, color of the tongue. हम अभी जीभ का कलर देख रहे हैं, अभी जीभ पर कोटिंग का कलर नहीं देख रहे हैं. Number 3, we see the shape of the tongue. Number 4, the tongue coating, and number 5, tongue moisture. So let's see here. So look at this tongue, look like very vibrant. Wow, very good spirit. हमने देखा भाई जीभ तो बड़ी शानदार दिख रही है, जीभ बड़ी वाइब्रेंट दिख रही है. Okay, what is the problem? Oh, patient is telling doctor, I am suffering with lower back pain. Oh, no problem. You will be very fine very soon. Why? Because tongue is very vibrant. Tongue is very live. The tongue spirit is very good. Whatever the problem, you will get very faster cure. आप ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करिए. Because we can see the tongue is very normal. Everything is fine, and tongue is having very good spirit. तो जीभ को देखा, हमने कहा भाई आप जीभ तो बड़ी वाइब्रेंट है, लाइवली है, जीभ की स्पिरिट अच्छी है, जो भी प्रॉब्लम होगी ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो. तो ये है टंग स्पिरिट का कमाल. अब पेशेंट कुछ भी बोले, कोई भी प्रॉब्लम बोले, वो ठीक जल्दी होने वाली है. सो दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द टंग. इसे हम कहते हैं जीवंतता, लाइवलीनेस. नाउ सेकंड वी आर मूविंग टू द टंग कलर. Now we are not looking the coating color, we are just looking the tongue color. हम जीभ के कोटिंग की बात नहीं कर रहे, हम जीभ के कलर की बात कर रहे हैं. So the normal tongue is pale red.
So pale because of the stomach, red because of the heart and kidney. जीभ के ऊपर जो पेल रंग होता है, फीकापन होता है, वो स्टमक के कारण होता है। स्टमक से फ्लूइड मिलता है तो जीभ का रंग उस फ्लूइड को प्राप्त करके पेल हो जाता है। So when the stomach sending the appropriate fluid, tongue become pale. On the other side, when heart is sending enough blood, kidney is sending enough fire, the tongue become red. जब हार्ट से एक सही मात्रा में ब्लड मिलता है जीभ को, जब किडनी से एक सही मात्रा में फायर मिलती है तो जीभ लाल हो जाती है। यही कारण है कि जीभ का रंग फीका भी होना चाहिए स्टमक के कारण और लाल भी होना चाहिए हार्ट और किडनी के कारण। अगर जीभ सिर्फ फीकी या लाल है ही नहीं तो गड़बड़ है, थोड़ा तो लाल होना चाहिए, और जीभ ज्यादा लाल हो गई तो भी गड़बड़ है। So when the tongue is only pale, not the red, oh no, it's not good. On the other side, when tongue is only the red and red or too red, it's not good. So we should have both the things in the appropriate amount. If the stomach is pale, means stomach is good. If the tongue is red, heart and kidney is good. But if anything is more, means that is hyperactive. अगर ज्यादा हो जाए कोई भी चीज तो वो चीज हाइपर हो गई। So stomach is sending the fluid to the tongue. So if tongue is having good fluid, then stomach is working nicely. If tongue is having good redness, then heart is working nicely, kidney is working nicely. So the normal tongue color is pale red. So whatever we see deficiency, if we see some deficiency, so we can do the diagnosis. हम उसके अनुसार diagnosis कर सकते हैं. So this is the third things, that normal color of the tongue. Again, I am talking about the color of tongue. I am not talking about the coating of the tongue. Now fourth, now we are looking the shape of the tongue. अब हम जीभ के shape की बात करते हैं. जीभ का shape आप देखिए, this is not the normal shape. This is not the normal shape. This is the deviated shape. This is not the normal shape. This is the deviated shape. So we are looking the shape of the tongue. If the tongue shape is not good, we are telling, okay, you are suffering with this some problem. Sometimes we are looking the tongue. So tongue is not like that. On one side it is swollen. On one side it is swollen. On other side it's normal. So we are telling, oh, you are not having normal shape. The tongue is having no normal shape. जीभ का रंग, जीभ का जो शेप है वो एकदम नॉर्मल नहीं, कहीं फूली कहीं पिचकी है ना, कहीं फूली कहीं पिचकी। तो ये अब जैसे आपका एक तरफ का गाल फूल जाए और एक तरफ का अंदर पिचका रह जाए तो ऐसा लगेगा कि भाई कैसा शेप है। So there should be good shape, like one side cheeks becoming thick and one side shrinked. So face will be not looking like good. In the same way, when you see the tongue, tongue should be having good shape. If the tongue is not having good shape, it means there is some problem. So sometimes tongue is getting deviated. जब जीभ टेढ़ी होती है तो हम कहते हैं भाई बिंड है, इसके कारण टेढ़ी हो गई है, लेकिन और भी बहुत चीज हो सकती हैं. So the fourth thing we see the shape of the tongue, and the fifth and final see, now we see the tongue coating. अब हम जीभ पर पाई जाने वाली कोटिंग की बात करते हैं. So always remember we are not directly talking about the coating. Coating is coming on the fifth number. So don't declare everything just by thinking the coating. हर चीज को सिर्फ कोटिंग समझकर आप डिक्लेयर मत कर दीजिए. कोटिंग के पहले चार चीजें और भी आती हैं, उनके बारे में पहले सोचिए. Think the fourth thing first, then come to the coating. The tongue coating also plays a very important role, and we know there might be many coatings. बहुत सारी कोटिंग हो सकती हैं टंग के ऊपर, right? So there might be many different coating. If the yellow coating showing the heat, black coating also showing the heat, or there might be coldness, it depends. So there might be many different types of the coating. Okay, so now the fifth number of the coating. So we see the coating, the fourth number of the coating. अब हम चौथे नंबर पर कोटिंग का विचार करते हैं. And the fifth number and the final number goes to the moisture. Now we see the tongue having fluid or not. If the tongue is having good fluid, good moisture, then fine. If the tongue is very dry, oh, the fluid is deficient in the body. हमारे शरीर में एक मॉइस्चर भी होना चाहिए. तो अगर जीभ जरूर से ज्यादा गीली है तो भी ठीक नहीं है, अगर जीभ एकदम सूखी सूखी है उसमें गीलापन नहीं है तो भी ठीक नहीं है. तो हर चीज प्रमाण में होना चाहिए. So everything should be in the balance. So we look all the five things. So when you do the tongue diagnosis, always go through with all the five things. Number one, the spirit of the tongue, how the person and the tongue look like. Number two, the color of tongue. Number three,
the shape of tongue, number 4 the tongue coating, and number 5 the moisture found on the tongue. जीभ के ऊपर किस तरह का मॉइस्चर अवेलेबल है. If the tongue is having good moisture, then well and fine. Otherwise, maybe we have to increase the fluid, या फिर हमें fluid को बढ़ाना है और fluid को घटाना है, right? If we get the tongue with white coat, the thin white coat is normal. If the coat is thin and white, it's normal. But with the cracks, crack is Yin deficiency. Crack Yin deficiency की निशानी है. So in this way, so whenever you see the tongue, the first thing it is coming, the tongue is. तो सबसे पहली आती है the spirit of the tongue. We know the spirit is very important thing. Spirit can be considered with this. So it is a power of your soul, power of your, आपकी जो आत्मा की एनर्जी है, आपकी जो आत्मिक एनर्जी है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है. If the tongue spirit is good, then we are telling your prognosis will be good. Prognosis will be good. The meaning of prognosis, speed of recovery. Speed of recovery will be good. So it depends on the tongue spirit. ये जीभ की spirit के ऊपर डिपेंड करती है. And if the tongue, suppose if the tongue is having not good spirit, is not having good spirit, maybe tongue is heavy, dry, tongue having dull, maybe black coat, maybe very unusual tongue. So we can tell prognosis is not good. Means speed of recovery is not good. Okay. We can do something for this patient, but the prognosis is not as faster as for the earlier person, as we have discussed about the previous person. कि अगर इसकी जीभ सूखी है, कटी फटी है, काली है और थोड़ा अनयूजुअल है, तो हम बोलेंगे कि प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है. स्पीड ऑफ रिकवरी इज नॉट गुड. Speed of recovery is not good. So it is about the spirit. Let's talk about the tongue color. अगर हम जीभ के कलर की बात, let's talk about the tongue color. If we talk about the color of tongue, I told you the tongue color is the normal tongue color is pale red. Pale का मतलब होता है फीका, यानी फीका रंग, और रेड का मतलब होता है लाल. तो जीभ का जो सामान्य रंग होता है वो होता है फीका लाल. अब देखो, ज्यादा लाल भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा फीका भी नहीं होना चाहिए. ज्यादा फीका हो गया मतलब ब्लड ही नहीं है भाई, और ज्यादा लाल हो गया मतलब कुछ ज्यादा ही गर्मी है. सो इट शुड नॉट बी मोर पेल और इट शुड नॉट बी मोर रेड, राइट? इट शुड बी नॉर्मल पेल रेड. सो द टंग कलर शुड बी नॉर्मल पेल रेड, राइट? सो टंग विल टेल यू what is the condition of stomach. The pale is because of the stomach. Pale is because of stomach. The red is because of heart and kidney. Heart and kidney. तो जीभ के ऊपर जो फीका रंग है वो स्टमक के बारे में बताएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो फ्लूइड होता है, हम ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल फ्लूइड होता है वो लाल नहीं होता, वो फीका होता है. इफ यू सी द नॉर्मल फ्लूइड, इट्स ए पेल, नॉट द रेड. Blood is red, definitely. Blood is red. And when we talk about the pale color, it will tell about the stomach. And when we talk about the red color, it will talk about the heart and the kidney. So the tongue color is telling the conditions of stomach, heart and kidney, all organ. इसके बारे में बताता है. Tongue is telling about these all organ, right? Suppose stomach is good, but heart or kidney is not good, right? So they are not supplying good energy. So there will not be red color is supplied. So heart is not supplying the good blood, kidney is not supplying the good fire or the ming fire. तो मानो कि स्टमक तो ठीक से सप्लाई कर रहा है, लेकिन हार्ट ठीक से सप्लाई नहीं कर रहा ब्लड, और किडनी ठीक से सप्लाई नहीं कर रही,
फायर, तो टंग कैसी हो जाएगी? रेड नहीं होगी, सिर्फ फीकी फीकी रह जाएगी। आप बोलोगे टंग तो फीकी है, लाल है, लाल इसमें है ही नहीं। Okay, so this tongue will be having deficiency of the blood and the deficiency of the fire. So the person is having poor hemoglobin. एक व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है, 8 है, 9 है, 10 है या 5-6 है। जीभ देखो एकदम फीकी फीकी, क्योंकि ब्लड है ही नहीं, और ब्लड नहीं होगा तो जीभ लाल कहां से होगी? क्योंकि जीभ को लाल तो हार्ट का ब्लड और किडनी की फायर ही करेगी। सो द पर्सन इज हैविंग पुअर हीमोग्लोबिन, मे बी 10 or 9 or 7 or 8 or 6. It means heart blood is not enough or the kidney fire is not enough. So how the tongue will be red? No, tongue will not be red. Tongue will be only pale, फीकी। टंग केवल आपको पेल 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 दिखाई देगी। तो इसका अर्थ है कि जब आप जीभ का रंग देखते हो तो जीभ का रंग देखकर आपको पता चल जाता है कि भाई ब्लड कैसा है, हार्ट का, किडनी की फायर कैसी है, और स्टमक का फ्लूइड कैसा है। सपोज ऑन द अदर साइड, लुक एट हियर. So if you see the tongue, if tongue is only pale, not red, so it means stomach is working normally, but heart blood is not working and the kidney fire is not working. Result, the tongue is only pale, केवल फीकी है, फीकी फीकी टंग, फीका रंग। कई लोगों की जीभ देखो जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जीभ ऐसी लगेगी जैसे जान ही नहीं उसमें, एकदम फीकी फीकी। So this is the person suffering with a deficiency of blood or deficiency of many nutrient in the body, maybe deficiency of the vitamin B12. So there might be many deficiencies. शरीर में कई प्रकार की deficiencies होंगी, कई प्रकार की deficiencies होंगी, right? On the other side, look at the tongue. Suppose heart blood is good, wonderful. Kidney fire is good, wonderful. Okay, so tongue will be good red, good redness. तो जीभ के ऊपर बढ़िया लाल रंग आ गया. On the other side, stomach who create the pale color, not good. Maybe person is taking the antibiotic. मानो कि व्यक्ति एंटीबायोटिक का सेवन कर रहा है और एंटीबायोटिक के सेवन से स्टमक सूख गया है, जल गया है, उसका फ्लूइड कम हो गया है, तो जीभ को ये पेल या फीका रंग नहीं दे पाएगा, तो जीभ एकदम लाल 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 रह जाएगी, not able to give the good. So if the stomach is deficient, maybe someone is taking the antibiotics. So because of the effect of antibiotics, the stomach is getting dry. So stomach will not able to provide the pale color. So the tongue will becoming, how the tongue will become pale? No, only red and red and red. So what I want to tell you, the stomach is also supplying the fluid. So tongue is getting lubricated. On the other side, heart is supplying the blood and kidney supplying the fire. So the tongue become red. Then tongue is normal. तभी जीभ नॉर्मल होती है, एक तरफ से स्टमक उसे फ्लूइड सप्लाई कर रहा है और एक तरफ से उसे हार्ट और किडनी अपना अपना ब्लड और फायर सप्लाई कर रहा है, राइट? So in this condition, tongue color speak a lot. Tongue color speak a lot. Stomach fluid means yin, and the heart blood and kidney fire is the yang. Okay, so we can find out red tongue means good yang, no redness, poor yang. लाल जीव अच्छा यांग है, नहीं है लाल, यांग कम है. Okay, pale, the tongue is having good fluid, good yin. Tongue is dry, poor yin. So yin is coming from the stomach. तो जीभ को yin कौन देता है? Stomach is giving the yin. So stomach fluid is giving the yin. And who is giving the yang to the tongue? The heart blood is giving the yang.
The kidney Ming fire is giving the yang to tongue. तो किडनी की मिंग फायर जीभ को लाल रंग देती है, यांग एनर्जी देती है, और स्टमक का फ्लूइड यिन देता है, तब जीभ जाके नॉर्मल होती है. सो दिस इज द नॉर्मल टंग. द नॉर्मल टंग मींस हु इज हैविंग यिन प्लस यांग बोथ एनर्जी नॉर्मल. जब दोनों ऊर्जाएं नॉर्मल होती हैं तब हम बोलते हैं कि दिस इज द गुड टंग. So now it's very easy to find out whether the person is having yin deficiency or the yang deficiency. If this supply is not good, then the yin deficiency. If stomach is not sending good supply, yin deficiency. Then जैसे आप देखो धरती को पानी ना मिले तो धरती क्या होगी, कट जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी, धरती में क्रैक्स हो जाएंगे. ठीक उसी प्रकार से जब स्टमक यिन को नहीं देगा, स्टमक फ्लूइड को नहीं देगा, तो जीभ जगह जगह क्रैक हो जाएगी. आपको सेंट्रल क्रैक दिखेंगे, कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल क्रैक दिखेंगे, आपको मल्टीपल क्रैक दिखाई देंगे जीभ में. सो व्हेन वी सी देयर इज नो वाटर, वी कैन सी द मल्टीपल क्रैक्स ऑन द लैंड, on the earth. In the same way, when the stomach is not sending yin, stomach is not sending fluid, there will be decreased fluid on the tongue. So the tongue will be having many cracks, maybe central cracks, side cracks. So the stomach is responsible for the yin on the other side. Heart and kidney is responsible for the yang. ये दोनों yang के लिए जिम्मेदार हैं. So on the other side, if the heart is supplying good blood, tongue will be red. If the person having blood deficiency, tongue will not be red. So we can find out the deficiency of the yin, the deficiency of the yang, the deficiency of the blood. We can find out each and everything very properly. हम हर चीज को पता कर सकते हैं जीभ को देखकर कि भाई यिन कैसा है, यांग कैसा है, यिन कम ज्यादा है क्या, यांग कम ज्यादा है क्या. तो इसके आधार पर हम पता कर सकते हैं. So this was the third condition. We have talked about the number 1, spirit of the tongue. Number 2, the color of the tongue. Number 3, we are talking about the shape of the tongue. तीसरी हमने बात करी थी shape की. Third, we have talked about the shape of the tongue. So tongue should we have good alignment. जीभ का एक alignment सही होना चाहिए भाई. So tongue should not be thin. It should not be excessive thin. Should not be ज्यादा पतली ना हो. अब एक कोई बंदा आ गया जिसका वजन 40 किलो, एकदम दुबला पतला शरीर, जरा सा खाता पीता तो डायरिया हो जाता है, तो भाई कहेंगे भाई थोड़ा वजन बढ़ाओ, बॉडी को मजबूत करो. पतला होना ठीक है, लेकिन इतना भी कमजोर और पतला होना ठीक नहीं है. Okay, so person 1, if the person is excessive thin, suppose some person is coming to you very thin, having 40 kg weight, if eating something here and there, getting the diarrhea, okay, then we are trying to do something for the person so can get some weight. So excessive thin tongue is also, we cannot tell the good shape of the tongue. If the tongue is very thin, it's not good. On the other side, if the tongue is excessive thick, it's not the good shape. अगर जीभ मोटी हो गई, जैसे स्पंज का टुकड़ा पानी पी के मोटा हो जाता है, ऐसी जीभ मोटी हो गई, वो भी ठीक नहीं. इसका मतलब है जीभ के अंदर फ्लेम बढ़ गया है, यानी बॉडी में फ्लेम बढ़ गया, तो जीभ में फ्लेम बढ़ गया है. Body is having more dampness, so tongue is having more dampness. So excessive thickness is the sign of, that is also not good, excessive thickness. So it is, then we will declare, oh, shape is not good, this tongue is having excessive thick. Now we are telling the, okay, bring the tongue out. किसी किसी की जीभ बहुत लंबी और किसी की जरा सी बाहर ही नहीं आ रही है. So the long tongue is not good. Long tongue is telling there is a excessive energy in the heart, excessive heart energy. And the short tongue is telling, short tongue is also telling something. किसी की जीभ देखो बहुत ही छोटी, तो पतली जीभ भी छोटी नहीं, मोटी जीभ भी छोटी नहीं, मोटी जीभ भी सही नहीं. इसको बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, हमने देखा कई लोग ड्वार्फ होते हैं, बौने होते हैं, 3 फीट के रह गए, तो बोलेंगे यार ये लंबा नहीं हुआ. सो दैट इज नॉट द गुड शेप. और कोई व्यक्ति 6.5 फीट का हो गया. सो एवरीथिंग शुड बी इन द बैलेंस. सो द शॉर्ट टंग
or the long tongue. This is not the good shape. We cannot consider them at a good shape. And maybe you are looking the tongue. Maybe tongue is swollen here, or the swollen here. Okay, अब कहीं कहीं swollen होगी tongue, swollen tongue. So this is not the good shape. This is telling some pathology. कहाँ पर सूजन आई? स्प्लीन के एरिया में सूजन आई, मतलब स्प्लीन में गड़बड़ हो गई. कहाँ पर सूजन आई? हार्ट के एरिया में सूजन आई, हार्ट में कुछ गड़बड़ हो गई. कहाँ पर सूजन आई? लिवर के एरिया में सूजन आई. This part is swollen, means the liver area having swollen, some problem in the liver. So the swollen tongue also explaining about the, okay, it's not good, the tongue telling about some pathology. So what is the shape? Shape means everything should be uniform. It should not be long, it should not be short, it should not be thick, it should not be thin, there should not be swelling. Then we will declare it as a normal tongue. तभी हम इसको normal tongue declare करेंगे, right? We are telling that हमने किसी की जीभ देखी, okay, जीभ बाहर निकालो, तो जीभ टेढ़ी निकल रही है. So this is the wrong shape. अब कोई व्यक्ति टेढ़ा होके चले तो आप थोड़ी बोलोगे इसका शेप सही है. किसी का चेहरा टेढ़ा हो जाए, facial paralysis, we have seen there is a deviated face. In the facial paralysis, we say, oh, face, shape of the face is not good. In the same way, when the bind is high in the body, the tongue will be deviated. हमारे शरीर में बिंड बढ़ जाए तो जीभ टेढ़ी हो जाती है अपने आप. So the shape of the tongue explain everything about the what happening inside the body. आखिरकार शरीर में गड़बड़ का है. किसी को लिवर में सूजन आ गई तो जीभ के लिवर एरिया पर भी सूजन आ जाएगी. If there is swelling in the liver, it will come on the liver area of the tongue. So the tongue is the mirror of whole body. So the fourth thing, we are talking about the shape of the tongue, and by looking the shape of the tongue, we are finding out everything about the tongue, right? And the fifth and the fourth thing, the coating. Now we are coming to the coating of the tongue. Coating of the tongue. फिर हम coating की बात करते हैं. Coating of tongue. So each and every coating are telling a lot about the tongue. जीभ पर पाई जाने वाली coating बहुत कुछ बताती है. So there might be white coating. White coating is the sign of coldness. There might be yellow coating. Yellow coating is the sign of heat in the body. These are two main coating, but there might be many other coating as well. ये तो दो मुख्य coating. And stronger the pathogen and thicker the coating. जितना पैथोजन स्ट्रांग होगा उतनी कोटिंग मोटी हो जाएगी. सपोज पैथोजन थोड़ा ताकतवर है तो कोटिंग थोड़ी मोटी होगी. पैथोजन ज्यादा ताकतवर है तो कोटिंग ज्यादा मोटी होगी. तो जितना ज्यादा पैथोजन स्ट्रांग होगा कोटिंग का मोटापन उतना बढ़ता चला जाएगा. सो इफ द पैथोजन इज स्ट्रांग द कोटिंग विल बी थिक. The pathogen is stronger, coating will be thicker. If you see the very, very thicker coating, it means the pathogen is very, very strong. So thickness of the coating is telling about a lot. Whether the pathogen is strong or less strong or the more strong. तो ज्यादा strong है कि कम strong है, इससे पता चलता है कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है, right? So now in this condition, now we also see coating speak a lot about the, we have discussed many classes about the coating. हमने coating के बारे में बहुत already discussion किया है. So we will go quickly. So the coating is telling a lot. Suppose there is a green coating, so it is a sign of heat. There is a brown coating, brown moist coating, right? It is a sign of heat. Black moist coating, sorry. So there's a brown coating, brown and very dry coating. It is a sign of heat. There's a black and dry tongue, sign of heat. तो brown coating हो ये भी गर्मी है, black coating है ये भी गर्मी है, green coating है ये भी गर्मी है, yellow coating, it is a sign of heat. These all are the sign of heat. On the other side, white coating.
is a sign of coldness. White coating is a sign of coldness, right? Black coating. Black plus moist. Okay, not moist, it is a sign of coldness. So we have already discussed a lot about the coating. हमने coating के बारे में बहुत कुछ discussion किया है. So the fourth thing we are telling about the coating. Coating से बहुत कुछ पता चलता है. And the fifth and the final thing we are talking about the moisture of the tongue. Moisture क्या बताता है जीभ के बारे में? What we are telling about the moisture? Moisture means fluid availability. कि जीभ के ऊपर कितना पानी है, जीभ में कितना पानी है, जीभ के अंदर जितना पानी है, यानी बॉडी के अंदर भी उतना पानी है. If the jeeb having good moisture, in body having good moisture. If jeeb is dry, in body is dry. So the tongue is telling about the moisture availability in the body. If tongue is having good moisture, body having good moisture. Tongue is dry, body is dry. So the tongue is telling about the fluid condition in the body. Okay, now suppose tongue is having too much moisture over the tongue, too much weightness, too much weight tongue, जीभ जरूरत से ज्यादा गीली है, it means there is a more fluid accumulation in the body. हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं तो ज्यादा पानी जम रहा है. More fluid accumulation in the body. Because tongue is having more moisture, it means there may be somewhere more fluid accumulation somewhere in the body. कि जीभ के ऊपर ज्यादा मात्रा में फ्लूइड की मात्रा का पाया जाना इस बात का प्रतीक है कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं ज्यादा पानी जम रहा है. If the tongue is having no moisture, then it's showing there is a dryness in the body. शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है. So in this condition, the moisture of the tongue is speaking about the availability of the fluid in the body. So in this way, we have seen the 5 things. Number 1, tongue spirit. Tongue spirit means if the good spirit, prognosis is good. If the तो जीभ पर हमने पहली चीज की बात करी कि जीभ के अंदर स्पिरिट का अच्छा होना जरूरी है. अगर जीभ के स्पिरिट अच्छी है तो हम बोलेंगे प्रोग्नोसिस अच्छी है. इफ द टंग स्पिरिट इज गुड, देन विल टेल प्रोग्नोसिस इज गुड. इफ द टंग इज वेरी ब्लैक, ड्राई, विदर्ड, क्रैक्ड, देन विल टेल प्रोग्नोसिस इज बैड. तो अगर जीभ का स्पिरिट अच्छा है तो हम बोलेंगे जल्दी ठीक हो जाओगे, और स्पिरिट खराब है तो हम बोलेंगे जल्दी ठीक नहीं होगे, टाइम लगेगा. Second thing, we have talked about the color of the tongue. The normal color is pale red. जीभ का रंग सामान्य रंग होता है pale red. तो पेल बताता है स्टमक के बारे में, फ्लूइड के बारे में, यिन के बारे में. तो हम बता सकते हैं यिन कैसा है. So we can find out about the yin because the pale color is telling about the yin, telling about the stomach, telling about the stomach fluid. We can also find out about the yang because the red color of the tongue is yang, which is coming from the heart, which is coming from the kidney. तो हम यांग के बारे में बता सकते हैं क्योंकि जीभ का लाल रंग यांग के कारण है. तो हम हार्ट की कंडीशन, किडनी की कंडीशन बता सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ टंग वी कैन टॉक अबाउट द हार्ट, ब्लड. हम ब्लड के बारे में बता सकते हैं. ओके, इफ द टंग इज नॉट हैविंग रेड कलर मींस ब्लड डेफिशिएंसी. सो द सेकंड थिंग टंग कलर. थर्ड इज टंग शेप. सो शेप आल्सो telling about many things. Sometimes we are having curved tongue, deviated tongue. अगर जीभ टेढ़ी है तो हम बताएंगे कि बिंड ज्यादा है. So a swelling somewhere, swelling in the spleen area means there is a problem in the spleen. So the shape of the tongue also telling a lot. Maybe thin tongue, very thin tongue. बहुत पतली जीभ है तो enough fluid नहीं है. बहुत मोटी जीभ है, स्पंज के टुकड़े की तरह, पानी पीकर स्पंज का टुकड़ा मोटा हो गया. If the excessive thickness in the tongue means body में flame ज्यादा है, body is having more dampness. So the tongue shape is also telling about a lot of things. And the fourth thing, tongue coating. Tongue coating हमने बताया कि coating of the tongue is telling about the pathology. White coating is the coldness, yellow coating is the heat. So the more and more thick coating means stronger the pathogen. जितनी मोटी coating उतना stronger pathogen ये बताएगा. And the fifth is the moisture. So the tongue moisture is telling about the condition of the body. अगर जीभ के ऊपर अच्छा moisture है तो जीभ में fluid अच्छा है, और कम moisture है तो जीभ में fluid कम है. So